everyone. Now in the previous discussion हमने sum up किया था on the point कि we discussed upon once an auditor has finally agreed to audit the financial statements of the company, now auditor has been officially hired as the auditor of the company. Now what is the auditor's next step of action, right? Next course of action that is going to be for the auditor. First of all, the auditor has to plan the audit, right? And then perform the audit. And then completion and review is the next step of the audit. And by the end, by everything's done, they ultimately prepare the auditor report that will be addressed to the shareholders of the company, and they will stating their opinion there. Alright, it's very simple. अब होता क्या है, but when they're planning the audit and इतना steps वो कर रहे हैं, the reason is because every onus is on them. राइट तो काफी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ऑडिटर की हो जाती है. सो इन दिस केस व्हाट कैन वी से इज कि जो ये ग्रोसरी स्टोर है, फॉर एग्जांपल हमने पुरानी वीडियो के अंदर भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर इज अ ग्रोसरी स्टोर एंड देयर इज अ बैंक, राइट. तो ग्रोसरी स्टोर हमने देखा कि ग्रोसरी स्टोर में लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, देयर विल बी लेस द लूट. But compared to the bank became more risky. उसमें ज्यादा the chances कि ज्यादा पैसे की हेरा फेरी हो सकती, manipulations can be higher. So what we can basically say is that bank is inherently risky. For example, inherent क्या होता है? Inherent is what you have inherited, right? For example, as a person, I must have inherited something from my parents, right? Something I must have inherited from my grandparents. For example, the way I look, the way I talk, the way I walk can be on my parents. Okay, so that's inheritance, right? So in the similar way, the whatever organizations that you're seeing are also inherently risky. For example, banks are inherently risky, right? So जब ऑडिटर प्लान करने लगते हैं ना ऑडिट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडिटर जो है वो अपना ऑडिटर रिस्क देखते हैं. ठीक है, तो ऑडिटर रिस्क क्या होता है? ऑडिटर रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क. So that is inherent risk into control risk into detection risk. अब inherent risk क्या होता है? That is your inherent risk, right? क्या organization inherently कितनी risky है without the application of control. Suppose that there is a control risk. What is control risk? That either आपके controls missing थे या the controls were not able to prevent, detect and correct on the timely basis. And then there is another point that is being called as the detection risk. What is detection risk? Very simple. Detection risk होता है कि आप डिटेक्ट नहीं कर पाए material misstatements throughout the course of the audit, during the course of the audit. Either you were not capable enough or the samples that you chose were not, were not the correct representative of the population. अब ये सब होता क्या and why do we do it and what is the purpose of it? How to find for the auditor's risk and everything, okay? It's a matter of discussion because ये discussions होती हैं, right? So now what is very important for you to understand is that, auditor risk is equal to inherent risk into control risk into detection risk. But why do we do it and practically ऐसे apply करना है? So what do we do is, example, अभी तो practically अगर हमें example मिलेगा अभी तो we will always understand with the help of a question, right? So once you are understanding with the help of a question, we always tell them, we look at the particular organization and tell them what is the inherent risk with this organization, right? Inherently, वो organization कैसे risky है, right? So उसके बाद, for example, the company is a listed company. Listed companies inherently are risky. Control risk, for example, they have a control that has been applied. For example, there is a security guard sitting outside the organization. बट वो सिक्योरिटी गार्ड रात के टाइम पर जब हम उसको बिठाते हैं वो सो जाता है. सो क्या है? कंट्रोल है, बट कंट्रोल इज नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिस्टेकमेंट ऑन द टाइमली बेसिस बिकॉज व्हेन द सिक्योरिटी गार्ड इज स्लीपिंग they cannot monitor who came into the building and who left from the building. अब वो the audit detection is, that is the auditor when they pick up the sample, either the sample was not the correct representative of the population. मैंने जो चीजें चेक की उसमें सब कुछ अच्छा था या सब कुछ बहुत ही बुरा था, but whereas the
इंटायर पॉपुलेशन इज नॉट लाइक दैट. मुझे लग रहा है सब कुछ अच्छा है, बट अल्टीमेटली इंटायर पॉपुलेशन में बहुत मिस्टेकमेंट्स है. But whereas it can be vice versa. So detection risk is either I was not able to detect because my sample was not representative of the entire population, or it can be, my sample was, the correct representative. मेरी team ही inefficient थी. So we look at it as sampling risk and non-sampling risk, right? So we discussed it a lot further in the, in the entire sessions and discussions. तो बहुत अच्छे से discuss करते हैं. So we get to know about these risks, right? Inherent control and detection risk. Right. उसके बाद क्या होता है? So it's very important कि आप समझो कि audit होता क्या है. So once you are planning an audit, you plan an audit as per International Standard on Auditing 300. They only say that whenever you are planning an audit, performing an audit, completion review hota hai, and when you're preparing auditor report, whenever you're doing it, you have to always follow your international standards on auditing. Right? So आपको क्या follow करना है? You're supposed to follow international standards on auditing, and that's what your job in Europe. That's what it's supposed to do. So you have to understand it really carefully. So ISA 300 correctly mentions you that you're supposed to plan an audit. And there are so many things that you do while you're planning an audit. So while looking at the organization, so what do we do is in ISA 300, while planning the audit, we are also considering for ISA 315. What does that say? Identifying and assessing the risk of material misstatements for understanding the entity and its environment. They tell you that, even if it's a first time audit for you, always look for the entity, always look for its environment, always look what they're doing, right? And then ultimately, then ultimately start planning the audit. मतलब मेरे को देखना है कि एंटिटी कहाँ पे ऑपरेट कर रही है, एनवायरनमेंट कैसा है, कितना रिस्क होगा मटेरियल स्टेटमेंट का. सो वी जज दैट, राइट. सो हम क्या करते हैं, हम इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को जज करते हैं सो दैट वी कैन look upon the detection risk. We can look upon कि मुझे sample size कितना बड़ा रखना. For example, if I say the organization is inherently very risky, the controls are not working effectively, there are high chances that the financial statements are manipulated. So at that given point of time, what will I do? Will I be picking up bigger samples or the smaller samples? I'll definitely be working more and bigger samples, right? तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको बेसिकली अपना काम जो है वो डिसाइड करना होता है. सो एवरीथिंग इज कोर रिलेटेड, राइट. सो 300 किया तो जब प्लानिंग करनी है तो उस टाइम पर रिस्क मटेरियल रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. वो कैसे करना है आपको, वो और भी सिंपल है. सो एंटिटी के रिस्क और एनवायरनमेंट को कैसे आपको एंटिटी एनवायरनमेंट और सब फैक्टर्स को कैसे कंसिडर करना है, सब कुछ देखना है. और जब आपने सब कुछ देखा, आपने रिस्क और मटेरियल में स्टेटमेंट देखा, तो आपने क्या देखा, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क कितना है, और उसके हिसाब से डिग्री ऑफ अपना वर्क जो है वो डिसाइड किया. सो वी हैव टू परफॉर्म मोर वर्क और लेसर वर्क. दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, एंड इट ऑल गोज इन अ फ्लो, राइट. उसके बाद हमने प्लान कर लिया, रिस्क और मटेरियल में स्टेटमेंट देख लिया. देयर माइट बी फ्यू थिंग्स दैट यू माइट हैव मिस्ड ऑन, राइट. उसके बाद वो कहते हैं अब अपना मटेरियलिटी लेवल भी देख लो. फॉर एग्जांपल दे कॉल इट एज मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड दैट वी डिसाइडेड एज पर ISA 320. ये एक होता है मटेरियल बाय साइज और एक होता है मटेरियल बाय नेचर. सो मटेरियल बाय साइज में क्या बोलते हैं, सो वी ऑलरेडी कॉल इट, आप 3 फैक्टर से डिसाइड करते हो. एक रेवेन्यू होता है, एक पीबीटी होता है, एक टोटल एसेट्स. सो ना आपको बेंचमार्क्स गिवन है. सो योर बेंचमार्क्स हैव बीन गिवन, दैट्स 0.5 to 1%, 5 to 10% and 1 to 2%. And you will always consider the lower threshold, okay, lower benchmark. मतलब हम रेवेन्यू के लिए लेते हैं 0.5%, पीबीटी 5% and total percent 1%. Anything which is over and above that is a material misstatement, right? हाँ, मटेरियल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ 1 CR कंपनी, ठीक है, मेरे यहाँ पे फर्म में $10 की 10 रुपए की गलती मिली. सो अब मैं बोलूंगी इट्स नॉट मटेरियल. ऑब्वियसली आपको देख के लग रहा है नहीं नहीं छोटी मिस्टेक है, छोड़ दो, लेट इट बी. बट यहाँ पर यही मिस्टेक 1 लाख की होता है. So if the mistake is for 100,000, so you will definitely consider that's a huge mistake. आप बोलोगे नहीं नहीं बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये तो ज्यादा बड़ी मिस्टेक है. So you will consider the amount and you will consider that whether it is important, it is material
और इट इज इमटेरियल, राइट? तो आप बोलोगे नहीं ये इमटेरियल है, लग रहा है, क्योंकि ऐसी और भी मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं। सो पहली बात, मटीरियलिटी जो होती है वो आप फॉर वन $100,000 भी मटेरियल, for some 500,000 is material. It all depends, right? So from perspective to perspective, it will make it will matter. तो हमारे लिए इसीलिए ऑडिटर की थ्रेश होल्ड के लिए जजमेंट्स जो है वो ऑलरेडी पास है. सो ISA 320 ऑलरेडी टेल्स यू दैट मटेरियल बट साइज के लिए आप रेवेन्यू का साइज 0.5% लेंगे. For PBT, you will take 5% and total asset 1%. Otherwise, for the auditors, they have already given a benchmark of 0.5% to 1%, 5% to 10%, 1% to 2%. And it is all up to the auditor वो कौन सा benchmark और कौन सा threshold लेना चाहते हैं. But हम क्या है, हम अभी at the student level है, तो हम 0.5%, 5% and 1% जो है वो consider करते हैं, right? So in the examination, you are supposed to consider half, 5 and 1. But it is auditor के लिए materiality उसका judgment है. So if you have to, if any question comes up in the section A and they ask you that auditor के लिए materiality is, it's dependent on their judgment, you will say, a lot of times students says no. क्यों? क्योंकि हमें compulsorily half, 5 and 1 follow करना है. नहीं, because you are at the, student level, but you are being asked to, portray as an auditor. But clearly आप अभी auditor नहीं हो, तो questions में ambiguity हो सकती है. For that reason, they ask you not to make any sort of judgment. But auditor के लिए it's matter of professional judgment. So that is why the percentage has been given to you. Half to 1%. Auditor might even go to 1.25%. 5 to 10%. The auditor might restrict themselves to 8%. Total asset 1 to 2%. The auditor might restrict themselves to 1 point, maybe lesser than 1. So they might even take it at 0.75% of the total asset. It all depends upon the auditor's judgment. But for the student level, you always consider this, 0.5%, 5%, and 1% for the total asset, right? So that's how you, first of all, you have understood about the planning and audit. Then you have to consider that ISA 315 के अंदर आपको identify करना and assess करना the risk of material misstatements through understanding the entity and its environment. And then you have to respond to that risk. कि how will you responding to those risks that you have assessed in the 315? मतलब कि मुझे ISA 300 के through planning तो करनी है, चलो very good, we have planned the audit. ISA 315 says that you have to also identify and assess. Identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. Okay. So आपको इसके जब रिस्क आपने सेट कर लिया कि हाँ ये रिस्क हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, तो अब आप क्या करोगे? यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दोज रिस्क. मैं क्या करूंगी? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सीन दैट सिक्योरिटी गार्ड was not up at the all given point of time, there must have been unauthorized entries as well. So what will I do to make sure that I'm responding to that risk? So responding to assess risk. और जब आप ठीक है रिस्पॉन्ड करोगे असेस रिस्क के लिए, that is given in ISA 330, right? So responding to the assessed risk, once you are done with it, ठीक है, तो अब आपको अपनी मटीरियलिटी का थ्रेशोल्ड भी डिसाइड कर लेना. सो मटीरियलिटी का थ्रेशोल्ड आपने जो मर्जी डिसाइड कर लिया. अब बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, can you change your materiality level and can the change, plans be changed? So a lot of times we say that, see that the students have said no. ऐसा नहीं होता है. The answer is yes. देखिए, जब भी ऑडिटर एक प्लान करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप भी प्लान कर रहे हो बाय अंडरस्टैंडिंग कि मैं ऑडिट कैसे करूंगी, यू वांट टू प्लान फॉर दैट पेपर, ठीक है, यू मेक अ प्लान, you might not be able to follow it and you change the plan. You might have followed a plan and you thought, it will take you this much of time. कुछ chapters जल्दी हो गए, कुछ chapters late हुए. So you've made a change in the plan. Similarly, auditor also makes a change in the plan. So auditor भी इस तरीके से अपने plan को change करते हैं. And whenever required, they might update the plan. And along with that, they can also change the materiality level if they look at some factors, down the line and they feel that the change is required. So they make the changes, right? So change is allowed and change आप कर सकते हो. हाँ जी, बिल्कुल आप change जो है वो कर सकते हो.
So once the auditor is done with the planning stage of an audit, the auditor moves to the performing stage, right? Performing क्या है? अब काम करने का टाइम है. पहले plan is clerical job, right? You're just sitting, making a plan. ऐसे 300 में plan बना लिया, एंटिटी देख ली, एनवायरमेंट देख ली और बहुत सारी चीजें देखते हैं उसमें. कंपनी के पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनकी मीडिया की क्या रिपोर्ट है, इंटरनेट में क्या लिखा है, व्हाट इज बीइंग स्टेटेड बाय द प्रीवियस ऑडिटर्स, कुछ भी जहां से भी इंफॉर्मेशन मिलती है सब एक्सट्रैक्ट करके वी मेकिंग द मीनिंग आउट ऑफ इट. एंड उसके बाद यू आर लुकिंग फॉर द रिस्क, एंटिटी का रिस्क एनवायरमेंट हो गया, उसका रिस्पॉन्सेज बना ली कि मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट विल आई डू इन द फ्यूचर, दैट्स व्हाट ऑडिटर्स आर प्लानिंग, एंड मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड बना लिया, सब कुछ कर लिया. दैट्स सिटिंग जॉब, दैट्स अ क्लेरिकल जॉब दैट यू हैव डन. क्लेरिकली मैं ये करूंगी. बट नाउ दिस इज द टाइम टू टेक एन एक्शन. So when you're taking an action, that is what we call it as performing an audit. So now how do we perform an audit is something that we will be discussing in the next part. So stay tuned with it, and along with that, do not forget to like, share and subscribe our channel because you get a lot of free content and we are more than happy to serve you guys, right? So if you want to stay in touch with us, it's very important that you go like, share and subscribe our channel. And along with that, do not forget to download our app. Right. So do not forget to download an app where you are getting a lot of free content. So we give you a lot of free content, including, a lot of booklets which provide you with the interview questions, how to prepare for the interview, how to get yourself job ready. All these things matter. So please make sure that you are, staying tuned with us. And, and let's just see you in the next session, जहाँ पर मैं और discussion करूंगी in respect to the audit.